एवरीवन, क्या आप भी उनमें से हो जिनको फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स बहुत ड्राइव करता है? यू विश टू डू योर स्टडीज फ्रॉम दिस फील्ड, बट आप में एक वो क्रेज भी है दैट काश ऐसा होता कि मुझे IIM से डिग्रीज करने को मिलता, या फिर मेरे पास कोई एक ऐसा कोर्स होता जो फिनेंस इकोनॉमिक्स रिलेटेड होता एंड मैं IIM से कर सकता. So trust me that guys, you are at the right place right now. Today in this video, I will be taking you through one special program, IPM program, which is awarded by IIM Amritsar. Now, what is the speciality? What makes it very special? So in this video, I will be discussing every point about it. I'll be taking you through the selection process. आप कैसे apply कर सकते हो, क्या तरीके हैं जैसे आप entry पा सकते हैं, and what do you actually study? Why it is very different from other programs that are offered by other IIMs. So see, IIM Amritsar जो डिग्री आपको ऑफर करती है guys, that is called as BSQFE. Now BSQFE stands for Bachelor of Science in Quantitative Finance and Economics. तभी मैंने आपको बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट एरिया फिनेंस है, इफ यू विश टू डू समथिंग वेरी ग्रेट, अगर आपको लगता है आपका बैचलर्स फिनेंस से होना चाहिए, यू थिंक इट हैज अ गुड स्कोप एंड दैट टू फ्रॉम IIMs, ट्रस्ट मी, IIM अमृतसर ने आपकी सुन ली है एंड इज लाइक ओके बच्चास, नाउ यू कैन कम हियर. एंड अगर आपको इकोनॉमिक्स बहुत ड्राइव करता है, इफ यू विश टू स्टडी थिंग्स रिलेटेड टू फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स, दिस इज द राइट प्रोग्राम फॉर यू. एंड इट इज नॉट दैट इट जस्ट ऑफर्स यू बैचलर्स, एक्चुअली इट्स योर डुअल डिग्री प्रोग्राम. सो आप बैचलर्स एंड मास्टर्स सेम कॉलेज से कर सकते हो, सेम IIM का टैग आपके पास हो सकता है. सो इमेजिन यू कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज डूइंग बोथ योर बैचलर्स एंड योर मास्टर्स and having IIM ka tag. Isn't that great? That is something we all demand for. That is something we always dream for. IIM Amritsar is exactly the right place for you. And also it is not necessary. Now there are a lot of kids who do not wish to do their post graduation from the very same place. So IIM Amritsar said no issues on it. आप bachelor's भी करो, आपका मन है आप masters भी कर सकते हो. So it says that जो फर्स्ट 3 years है जहां पे आपको ग्रेजुएशन करना है, सो दैट कोर डोमेन दैट आई टोल्ड यू इज फ्रॉम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, एवरीथिंग यू विल स्टडी. एंड आपको लगता है बैचलर्स के बाद इफ यू विश टू टेक एन एग्जिट, आप आराम से कॉलेज से एग्जिट कर सकते हो एंड यू कैन ग्रेजुएट विद BSQFE डिग्री. बट इफ यू विश टू, अगर आपको 3 years के बाद भी PG भी करना है एंड विद द सेम फ्रॉम द सेम कॉलेज हैविंग दैट सेम IIM का टैग, अमृतसर सेज नो इश्यूज, देन फॉर 4th and 5th years यू विल बी क्लब्ड विद द मैनेजमेंट MBA बैचेस ऑफ IIM अमृतसर एंड आप वहां से पढ़ सकते हो. सो एक्चुअली ये आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम है विच इज अवॉर्डेड बाय IIM अमृतसर. एंड ऑल्सो नाउ क्वेश्चन कम्स, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अप्लाई कैसे करना है, हाउ वी कैन गेट एंट्री इनटू इट? आंसर इज वेरी सिंपल गाइस. आप जो इंदौर का एग्जाम देते हो ना, IP MAT इंदौर, सो एक्चुअली IIM अमृतसर इंदौर के स्कोर्स पे आपको बुलाता है. सो बेसिकली जब भी आप IIM इंदौर को में अप्लाई करोगे, सो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर यू हैव टू बहुत अच्छे से कीप इट विद यू. जब भी IIM अमृतसर अपने फॉर्म रिलीज करेगा, सो आपको IIM इंदौर के जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स है ना, उसको आपको वहां पे अटैच करना होगा एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा. Once result of IIM इंदौर इज आउट, सेम रिजल्ट के बेसिस में एक IIM अमृतसर का भी क्राइटेरिया है फॉर सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ऑल, अकॉर्डिंगली फिर वो आपको कॉल करता है. नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स, ये भी ठीक है, एक एग्जाम मल्टीपल कॉल्स आएंगे, 2 IIMs हमें कॉल कर सकते हैं, सीट्स कितने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे पास. सो सी, IIM अमृतसर एक्चुअली हैज 60 सीट्स. अभी तक जो ऑफिशियली हमें पता चला है दैट इज अबाउट 60 सीट्स, विच इज नॉट लेस, एक्चुअली बहुत है. इमेजिन समहाउ यू गिव इंदौर एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, बट आपको स्टडीज फिनेंस रिलेटेड करनी है, देन यू कैन श्योरली गेट कॉल फॉर IIM अमृतसर एज वेल इफ यू हैव गिवन दैट पेपर वेरी नाइसली. नाउ टॉकिंग अबाउट कौन कौन से कोर्सेज या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे वो 3 years के ड्यूरेशन पे. सो सी, बेसिकली जो आपके कोर कोर्सेज होंगे उसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, देन यू हैव इकोनोमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमी, गेम थियोरी, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स,
कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडल्स, फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस. सो बेसिकली आपका कोर जो कोर्सेज पे फोकस करता है, इफ यू हैव सीन बेटा, दैट इज solely focused upon finance and economy and the various diverse areas of it. Also जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो आपके कंसिस्ट होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, critical writing skills, calculus, algebra, differential equation, real analysis, statics, probability, and even you study AI ML also, artificial intelligence, machine learning and all. ये सारा कुछ आप पढ़ाते हो. आपको Python से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है. So are you seeing the variety? Not only bookish language they are providing, or not only one genre or one area you're studying. But as you're seeing that AI का भी बहुत trend and scope is in the AI only. So they are even teaching you Python codings and languages and all also. Plus आपके पास जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज अवेलेबल है वो है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉज. Not only this, one of the best parts about it is that you get to write your own research project as well. So students can apply the theories, concepts and analytical tools learned in the first and second year to work on a research project. Now you imagine you saying that, oh, we have done research upon it. हमने पूरा research project, ये research papers publish किए हैं. So that is so great. What you have learned, you have applied it. Isn't it very good option for you guys? So, and also it offers you internships as well, so that whatever you have learned, whatever you have studied, you can apply the very same knowledge in the field as well. So it says the program offers an opportunity for deep interaction with industries also at various stages. Students are expected to undertake a social involvement project which is called as SIP, designed to sensitize the students to the issue faced by the society at large and innovative ways to challenge what they have studied in the class. Then two summer internships for 8 to 10 weeks with corporates. I am Amritsar host, recruiters from some of the leading companies in banking, financial services, insurance, that is BFSI, and fintech sectors as well in the country. So are you able to see college खुद आपको पढ़ा रहे हैं and then they are providing you different opportunities to work with such great companies which will really give you great exposure. So once you come out of the college, you know, lot of doors are open for you. Then if I were to talk about classroom experience, application is really great. As I told you, you get to do the project, then you get to do the internships, and you get to, you get to apply the research project as well in the third year, as we have seen. So actually this program really gives you real world impact, real world learning, and once you're out from the college, you really are ready to make a big impact upon your career. Your lot of doors to success are open because you have studied exactly what is in demand nowadays in the MNCs and the companies and the outside market. If I talk about why this program is very special, what is the proposition? So it is special because of the focus that it puts upon the course that it is offering. Of course, comprehensive breadth, a light faculty that would be teaching you. It says robust introduction to all fundamental areas of business management. So the learning that is provided to you and the faculty that is teaching to you would be very experienced. So आपको real life learning भी provide कर पाएंगे, real world exposure भी मिलेगा, and progression, future proof career, as in once you come out of the college, you are sure that you are going to have very great career with you, right? And imagine that career with the IM degree, IM tag is all that we crave for. Now, कमिंग टू फी स्ट्रक्चर, हमने बात करा कितनी सीट्स होती हैं, कैसे आप कॉलेज में एंट्री ले सकते हो, क्या कोर्स ऑफर होता है. बट एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितनी फीस है. दैट फीस समटाइम्स इज अ बर्डन.
to lot many students. So talking about it, actually आप देख सकते हो आपके पास ये पूरा amount mentioned है. So all total अगर हम बात करें so fee that you give for first year is actually somewhere around your 7 lakhs, right? So ये semesters में आपकी fee divided है. Grand total की अगर आप बात करोगे so that is somewhere around 17 lakhs and 75,000, 18 lakhs approximately आपका fees का bifurcation हम करते हैं. Then coming back to the next very important option, placement, because that is always important for us. पढ़ लेंगे हम इतनी फीस दे देंगे, बट हाउ अबाउट द प्लेसमेंट, हमें प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दैट आई हैव डन, the track record says that IIM Amritsar first of all provides 100% placement. Now it differs of course to the cream layer top 25% जो students हैं, then according to the list the value, you know, the placement amount might differ, but it has been seen that IIM Amritsar provides 100% placement, which is good. At least आप job लेकर के college से निकलोगे. Let's say अगर गलती से भी कोई बच्चा है जो अच्छा नहीं perform कर पाया, otherwise as I always say you have to be in the top list. And if I were to talk about the highest package, so highest package offered by IIM Amritsar is somewhere around your 26 lakh. I'm talking about the domestic package. Then average package की बात करते हैं, so that is somewhere around your 19 lakhs, even more than that, and which is not at all less as comparison to other institutes if I talk about guys. So placement भी एक बहुत बड़ा you know key segment है why you should get into the IIM Amritsar. And now coming to what are the pluses side and the minuses side, because that always is a question. So it's very clear guys, अगर आप चाहते हो 12th के बाद easy entry मिले आपको IIMs में and all your degrees have IIM tag, then you must go to this program and to this college. But अगर आप चाहते हो you know 5 year fees आपको लग रहा है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं, fee is a burden, then थोड़ा सा maybe that negative side might come, that minus point can come in your mind. Solid flagship placements, and but if you're other बच्चा who's like anyhow I want to get into a college जो मुझे अच्छा placement provide करेगा, then this college is for you and this course is for you. Also, when you are that person who's very much interested into finance and economics, then this program is for you. And transit campus reality could be one minus side for you. Also multidisciplinary curriculum, अगर आप उन बच्चों में से हो जो बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हो and you want to be ready that after 5 years और after 4 years जो आप दुनिया में जब आप देखोगे जो changes होंगे, and if you want to be you know in according to those changes, parallel to those changes, then this program is for you, because you are learning you know AI things, you are learning finance, you are learning about economics, and you are doing internships, you are doing research projects. So actually आप सारी वो चीजें कर रहे हो जो कॉलेज के बाद आपको हेल्प करने वाली है. Rigorous, अगर आप उन बच्चों में से हो who cannot take rigorous academic load, then you need to give it a thought. But अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, so then it's a call for your future guys. So rigorous academic load होगा, but then you need to have that strength that anyway कुछ भी हो I'm gonna bear that, because we want a great future, right? So that's it guys about IIM Amritsar. Now I think I have provided you all the details, and follow, be a part of LPT community to you know keep be updated with all the such updates that are coming about the IPMAT, about IIMs, जो भी changes हैं, जो भी updates हैं, we as a team will always be there and will always be on the front foot to provide you each and every detail. Also you can connect with us on Telegram, upon Insta, on various platforms that are available. So do be a part of LPT community. Thank you guys. Take care of yourself. Bye-bye.